Hello everyone. In this quarantine period, we are thinking about our future. But what about the future of our nature? So do one big towards our nature. आज की जो एक्टिविटी है दैट इज मेकिंग ऑफ सीड बॉल्स. सीड बॉल्स की प्रोसेस तो हम देख लेंगे जो कि प्लांटेशन पर्पस के लिए है, लेकिन ये सीड बॉल्स बनाने के बाद आपको करना क्या है. अगर आपने ट्री स्पीसीज लिए हैं तो क्वारंटाइन पीरियड जब खत्म हो जाएगा तब ये सीड बॉल्स आपको ट्री स्पीसीज के सीड बॉल्स आपको रोड साइड में फेंकने हैं. उसके बाद कुछ सीड बॉल्स आपने बनाए होंगे कि गार्डन प्लांट में भी लगा सकते हो, और ऐसे सीड बॉल्स जो है वो फार्मिंग पर्पस के लिए भी, जैसे कि पपाया है जो कि फार्मिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. फॉर मेकिंग सीड बॉल्स वी नीड क्ले सॉइल. देन this is compost but it is optional. Then these are seeds of sitafal and imli. These are tree species. Then garden plant gulbas, and for farming purpose these are the seeds of papaya. Then we need water, pencil or any kind of rod, and then this is the drying tray. Let's start making seed balls. सबसे पहले आपको कंपोस्ट ऐड करना है क्ले सॉइल में, एंड देन ऐड वाटर टू मेक अ डो. जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही डो हमें बनाना है. नाउ रोल द सॉफ्ट क्ले बिटवीन योर palms. Sides should be as per the size of seeds. Now make a small hole with the help of pencil and put seeds into the hole. You can see the hole. The hole should be as per the size of seeds. Put the seed into the hole and reshape the balls. And set the balls on a rack to dry for several days in warm or airy places. You can see the size of tree species. Seed balls are large and garden plants seeds are small. We have made small size balls and this is for the purpose germination process. Seed balls are ready. Thank you.